Hello students, welcome to the class, and today now we will first discuss some of the numerical based on the Henry's laws, and later on we will discuss here about the vapor pressure. So the first problem is the Henry law constant for oxygen that is dissolved in water. It is given as 4.34 into 10 to the power 4 atmosphere at 25 degree Celsius. Now the partial pressure of oxygen in air, it is also given 0.2 atmosphere, and so we are required to calculate the concentration of dissolved oxygen in water. So partial pressure is known, KH value is known. So first we may find out the mole fraction of oxygen in water. So from the formula P equal to KH into X, that is your Henry's law. So X will be now become P by KH. Now you put the value of P by KH, that is 0.2 atmosphere, and KH this much value. On simplifying this calculation, so we get the mole fraction as 4.61 into 10 to the power minus 6. So that is your very low mole fraction. So now we may first consider here the 1 liter of the solution. So mass of the solution will be approximately equal to the mass of the water, because here the oxygen, the amount of oxygen is very low. So number of mole of water in the solution, that will be the, we have taken the 1 liter of the solution, so mass now will become 1000 gram. So number of mole of water, it will be 1000 by 18 mole, and from the mole fraction of oxygen, that formula X of O2 equal to NO2 divided by NO2 plus N of water. So now since in this solution the number of mole of oxygen is quite lower in comparison to the number of mole of water, so this can be now neglected here. So we may simply write here the N of O2 divided by N of water. So from this relation we may calculate the number of mole of oxygen as the mole fraction of oxygen multiplied by the number of mole of water. Now put these values. On simplification we get here the number of mole of oxygen as 2.56 into 10 to the power minus 4 mole. So the next one we may find out here the concentration of dissolved oxygen. So that can be known from the relation N by V. So the value of number of mole is 2.56 into 10 to the power minus 4, and volume we have taken as 1 liter. So that become your equal to the molar concentration or the mole per liter. Okay, now come to your the second problem here. The what concentration of nitrogen should be present in a glass of water at room temperature of 25 degrees Celsius under 1 atmospheric pressure. Assume the mole fraction of nitrogen at 0.78, and the KH value for nitrogen, it is given 8.42 into 10 to the power minus 7 molar per mm of mercury. So see here the unit of KH, it is not directly in terms of the pressure, but it is given in terms of molar per mm of mercury, right? तो यहाँ पर हम अपने जो हेनरीज लॉ को जो फार्मूला है उसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा. तो फर्स्ट नाउ वी मे कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. So that will be the mole fraction of nitrogen into the total atmospheric pressure, that is 760 mm of mercury column. So this partial pressure comes out to be 592.8 mm of mercury. Now we may write here the solubility of nitrogen equal to KH into P. Generally we are writing here the Henry law formula as P equal to KH into X, where X can be known as the solubility. But here since the unit of the KH, it is given per mm of mercury, so we have to modify our the relation. So solubility now will become KH into P, so that the unit of this pressure and the unit of KH that is given in terms of inverse of pressure unit may get cancelled out. Okay, so KH value now this much 8.42 into 10 to the power minus 7 molar per mm of mercury into P of nitrogen 592.8 mm of mercury. Now see here
this is in the numerator, this is in the denominator, so the pressure unit get cancelled and we will get here only the unit of molar concentration, that is mole per liter. So on simplification we will get here the solubility of nitrogen as 4.99 into 10 to the power minus 4 molar. Okay, so next one here we may discuss here what the meaning of vapor pressure of a pure liquid. So this the vapor pressure already once you have been taught in your the first year level, but again in a very brief I am discussing here the meaning of the vapor pressure. So vapor pressure का meaning है the pressure exerted by the vapors of a liquid, right? तो जो भी liquid है उसका vapor form होगा, तो वो vapor को अगर हम एक closed container में रखेंगे, so that vapor will exert the pressure over the surface of the liquid. And now here both the processes are going on. liquid से vapor भी बनेगा और vapor से back फिर liquid में condensation भी होगा. तो जब equilibrium कंडीशन रीच हो जाएगी तो उस कंडीशन में वेपर का जो भी प्रेशर होगा एट द गिवन टेम्परेचर, सो दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड. ओके, नाउ द व्हाट द वेरियस फैक्टर दैट मे अफेक्ट द वेपर प्रेशर. सो फर्स्ट वन इज द योर नेचर ऑफ द लिक्विड. सो नेचर ऑफ द लिक्विड हियर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उस लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा इसका वेपर प्रेशर बनेगा. ऐसे ही टेम्परेचर में हम जब टेम्परेचर ज़्यादा राइज करते जाएंगे तो हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती जाएगी और उससे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो वेपर में उनका कन्वर्जन और ज़्यादा होता चला जाएगा. इसका मीनिंग कि वेपर प्रेशर विल इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर. Okay, so these were the two important factors that may affect the vapor pressure. Now we may discuss the vapor pressure of a liquid solution. So here liquid solution means that is solvent is our liquid. Solute may be your anyone, right? It may be liquid, it may be your gas or the solid. So the solution of gas in liquid already we have discussed in your the Henry's law, right? So here we will discuss the liquid solution when the solute is either liquid or the solid. So the vapor pressure of the liquid solution, it is your given by the Raoult's law. So what is the Raoult's law? Now we may discuss here. तो किसी भी volatile component का, volatile component का मीनिंग क्या है कि जिसका वेपर फॉर्मेशन होता हो, ठीक है. तो इसका मतलब जो सल्यूट है, सल्यूट मे बी वोलाटाइल और इट मे बी नॉन वोलाटाइल, बट सॉल्वेंट इज ए लिक्विड, सो सॉल्वेंट इज ऑलवेज ए वोलाटाइल, राइट. तो यहाँ पर किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का तो वो सल्यूट भी हो सकता है या फिर सॉल्वेंट भी हो सकता है. सो पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mole fraction of that component, right, at a certain temperature. ओके, तो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है. तो नाउ इन द योर मैथमेटिकल फॉर्म वी में राइट हियर, सपोज हमारे पास एक वोलाटाइल कंपोनेंट ए है, तो पी ए इज योर प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए. सो vapor pressure of the component A, it is directly proportional to the mole fraction of A, or we may write here PA equal to K times XA, where K is a constant. Now here if the mole fraction of the component A, if we may take as 1, so when the mole fraction of this your 1, it indicates only the single component is there, right, and no other component is present. So now if you put here XA equal to 1, so at that time the vapor pressure will be called as the vapor pressure of the pure liquid or the pure solvent. So that we may represent by the PA naught. It means if your XA equal to 1, then PA we may write as PA naught. So these two value if you put in this relation,
so we may find out the value of K. So PA equal to PA naught equal to K into XA equal to 1. So K now we will get as PA naught. So ये K की वैल्यू फिर बैक हम इस रिलेशन में पुट करेंगे, तो PA की वैल्यू आ गया PA नॉट इंटू XA. और एक्चुअली ना ये रिलेशन हम डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं, PA इज प्रोपोर्शनल टू XA, सो PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, वेयर PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ A इन इट्स प्योर स्टेट. ओके. अब मान लो हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है. बाइनरी सोल्यूशन का मीनिंग कि वहाँ पर एक सल्यूट है और एक सॉल्वेंट. सॉल्वेंट तो हमेशा एक होता है, बट नंबर ऑफ सल्यूट में भी एनी. तो बाइनरी सोल्यूशन के लिए यहाँ पर सल्यूट भी केवल एक ही है. तो सपोज यहाँ पे हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट A और B वो दोनों ही वोलाटाइल है. तो इट इज योर कस्टमरी दैट इज द A वी मे डिफाइन फॉर द सॉल्वेंट एंड B that is your meant for the solute. So PA according to your the Raoult's law we may write here PA not into XA. Similarly अगर B component भी volatile component है तो इसका भी वेपर बनेगा. It means we have the partial pressure of component B also. So PB equal to PB not into XB, right? So total vapor pressure, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट का वेपर बनेगा, तो टोटल वेपर प्रेशर P will be PA plus PB. And PA equal to PA not into XA plus PB equal to PB not into XB. अब हमारे पास सोल्यूशन में जब दो कंपोनेंट हैं A और B, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम दैट विल ऑलवेज बी 1, राइट. सो हियर वन ऑफ द मोल फ्रैक्शन कैन बी रिप्लेस्ड विद द अदर. तो सपोज हमने XA को XB के टर्म में रिप्लेस किया, तो XA इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस XB. तो यहाँ से लिखा हमने PA नॉट और यहाँ XA की जगह लिखा 1 माइनस XB प्लस PB नॉट इंटू XB. ओके. अब यहाँ से ये ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, तो ये हो गया PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB प्लस PB नॉट इंटू XB. ये फिर थोड़ा सा टर्म को हमने रीअरेंज किया, ये PA नॉट और इन दोनों में से हमने XB को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया PB नॉट एंड ये हो गया माइनस PA नॉट, राइट. सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल वेपर प्रेशर व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल. सो P इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट टाइम्स XB. ओके. सिमिलरली हम यहाँ पर जैसे हमने A को रिप्लेस किया था B के टर्म में, अगर हम B को A के टर्म में रिप्लेस करें, so we will get the relation like this. So total pressure that is P equal to PA plus PB and PA will be PA naught into XA and PB naught into XB. तो यहाँ पर XB को हमने रिप्लेस किया with XA, so PB XB की जगह लिखा हमने 1 माइनस XA. ओके. तो ये PB नॉट इंटू 1, ये हो गया PB नॉट, वो यहाँ लिख दिया. अब इन दोनों टर्म में XA कॉमन है, तो ये आ गया PA नॉट और यहाँ से आ गया माइनस PB नॉट टाइम्स XA, राइट. सो आइदर यू मे यूज दिस फार्मूला और दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर. नाउ दिस वी मे जस्ट रिप्रेजेंट दिस वन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. तो ये हमारे पास ग्राफ भी है, ये है वेपर प्रेशर, राइट. ये PA, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज करस्पॉन्डिंग टू PA. सो दिस इज नाउ हियर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दिस वेपर प्रेशर. सो द ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन. So when the mole fraction of A it is your 1, it means the only one substance is there, pure A, and there is no B, that is XB is 0. So at this stage the vapor pressure of the solution will be equal to the vapor pressure of A alone, that is PA naught. So this point is corresponding to PA naught, and when now XA will become 0, right. So when XA will be 0, it means the PA will also be 0. So now this is a when XA 0, so this is the point, and this is a linear relation, right. That is your varying linearly.
So just simply you may join this point with straight line. So that will give you the variation of PA with varying mole fraction of A. And similarly on the same graph we may plot for the vapor pressure of B. So when XB is 0, it means PB is 0, and when XB is 1, so it will be PB naught. Join these 2 points, so that will give you the variation of the vapor pressure of the component B. Okay, so here these are the two variation. अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, so that will give the total vapor pressure PA plus PB, right? So this is your the graphical representation what earlier we have defined here in a mathematical terms. Now the mole fraction of the component in the vapor phase. तो यहाँ पर हमने जो मोल फ्रैक्शन लिया था XA और XB, that was the mole fraction of the component A and B in the liquid state, right? अब इन दोनों का ही वेपर बन गया, तो वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सो दैट कैन बी डिटरमिन्ड नाउ बाय दिस वे. तो यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट का YA और YB एज्यूम कर लिया, और इनका पार्शियल वेपर प्रेशर है PA and PB, and that can be determined from the Raoult's law. So already we know the value of PA and PB. Okay, and the total pressure, simply by adding we will get the total pressure. So now the partial pressure or the partial vapor pressure of A in terms of the total pressure, so that will be equal to PA equal to YA, PA equal to YA into P, where YA is the mole fraction of A in the vapor phase, right? So यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो YA है, it is the mole fraction of component A in the vapor phase, while P is the total pressure. Okay, तो यहाँ से हम YA डिटरमिन कर सकते हैं PA by P, right? That is your according to see Dalton's law of partial pressure. And similarly PB equal to YB into P, so YB now become PB by P. Okay, so in this manner we can determine here the mole fraction of the component A and B in its vapor phase. Okay. Now the next one here, it is the somewhat we can say the Raoult's law and Henry's law. These two law we have already discussed. So here the Raoult's law is considered as a special case of Henry's law. So according to Raoult's law, we are having the relation PA equal to PA naught into XA, right? So this relation gives you the vapor pressure of volatile component A present in the solution. And according to Henry's law, PA equal to KH into XA. So here this pressure is applied over the solution, right? And that is the mole fraction of A in the solution. So this gives you the solubility of A in the solution. So it means these are the two reverse process. यहाँ पे हेनरी लॉ में क्या है, हम गैस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से सॉल्यूशन से वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है राउल्ट्स लॉ में, राइट? तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें एक्सप्रेशन 1 और 2 में, तो यहाँ भी PA है, यहाँ भी PA है, ये भी X है, ये भी X है, तो डिफरेंस क्या है? ओनली, फिर से बोलिए. हाँ बोलिए. हाँ, सो नाउ हियर द PA according to your the Raoult's law, PA naught into XA, and according to Henry's law, PA equal to KH into XA. If you compare the relation 1 and 2, so what is only the difference of the proportionality constant? In the Raoult's law it is PA naught, while in the Henry's law it is KH. So that's why the Raoult's law is considered as a special case of Henry's law. So that's all for the today's discussion. Thank you.